Hello my dear student, in this class we will see that at two different angles, if you projected a projectile, then the projectile cover same range, and how it is possible that we can be see or prove in this class. Then we will practice some numerical related with the projectile motion. So before we will start this concept, first we know about the projectile motion. If we projected a projectile with some angle theta with horizontally, then suppose this is u through which we projected a projectile. The u is the initial velocity of the projectile, and this u is divided into two components, that is along horizontal ux is us cos theta, and vertical uy is u sin theta. This u component divided into two components, and top, and this is the path through which the projectile is moved. Trajectory path, mathematically it is parabolic. At top, if the projectile reach from the ground, we say that this is maximum height of the projectile from the ground in vertical direction, and in maximum height, at maximum height, the horizontal velocity is 0, but vertical velocity at maximum height the vertical velocity is 0, because vertical velocity is influenced by the action of gravity, because gravity is also act in vertical direction with the downward direction, that is towards the center. So vertical velocity is 0 if we projected initially the vertical velocity. Suppose the vertical velocity is decreases and finally 0 due to action of the gravity, because gravity also acts towards the vertical direction, towards the center. Then and top vertical velocity is 0, then finally the vertical velocity increases, and finally the vertical velocity is same. जेते वर्टिकल वेलोसिटी तो तुम ऊपर को प्रोजेक्टाइल के प्रोजेक्टेड करछ सेते वेलोसिटी द्वारा से तल के ही आसबा. अब देखो वर्टिकल वेलोसिटी रो काम सर एबे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब जगह रे समान रहबा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ता सब जगह रे समान रहबा. काजे because it is not influenced by the gravity. So acceleration due to gravity is 0, then velocity acceleration 0 केते बेले आबा जेते velocity तमा यूनिफॉर्म रहबा. तो horizontal velocity सब जगह रे समान रहबा, because तार ऊपर किछि gravity action नै करे. किंतु vertical velocity ता टॉप रे 0 रहबा. आ गुरे जिनिसटा तमे जानिछो जे vertical velocity and horizontal velocity is always perpendicular to each other, so that they cannot depend with each other. And if we find the velocity of projectile at any instant, at any point, then we draw a tangent at that point, and that tangent gives the velocity of projectile. I have already said about this all of the concept in previous class. So तमे जदि जे कोनसी पॉइंट रे प्रोजेक्टाइल मोशन रो वेलोसिटी कैलकुलेट करो, प्रोजेक्टाइल रो वेलोसिटी कैलकुलेट करबो, से पॉइंट रे तमे टांजेंट ड्रा करबो, दैट टांजेंट गिव द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हिच इज इक्वल टू ux uy. पैरेललोग्राम जदि तमे सॉल्व करबो बोले दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर रो रूट ओवर, बिकॉज़ uy ड्रा करबो यारे ux draw करबो. तो this tangent or the final total velocity of projectile is x axis diagonal, and it is represent the resultant velocity ux, and this is uy. So finally v is equal to x square plus uy square, and it's perpendicular to each other. So 2ux uy cos 90 0. So this is the net velocity at any instant of the projectile. So ई जिनिस टाइम के देखबा थिला जे velocity of projectile at any instant. So देखो एबे v is equal to we can write that is v is equal to ux uy.
that means ux that means total velocity is bx plus vy ର square हवा तो initial velocity final velocity is horizontal ର समान होगा because the velocity is always same throughout the motion because it is not influenced by the action of gravity. So ux is ux cos theta u cos theta whole square and vy, what is the value of vy? Final velocity can be write as u plus at uy plus minus gt, that is final velocity can be write as uy. Final velocity along vertical direction because resultant velocity is equal to horizontal velocity plus vertical velocity रो स्क्वायर प्लस vertical velocity रो स्क्वायर रूट होगा तो horizontal velocity तो सब जगह समान होगा u cos थीटा के u cos थीटा स्क्वायर के स्क्वायर अब vertical velocity रो का जे vertical initial velocity 80 तो vertical initial velocity कितने u sin theta because initial u cos theta and vertical initial velocity u sin theta minus g t. So you can be right in this case vy instead of vy we can be write u sin theta minus gt, then vy square is equal to c square. Finally net velocity is u square cos square theta minus if we put the formula a minus b whole square then this is u square sin square theta plus g square t square plus 2 plus g square t square minus 2 u sin theta gt minus 2 u sin theta gt. So this is the instantaneous velocity of the projectile. So आउरे जिनिसटा हमें देखमा जेटा कि तुमके कहली जे रेंज तो रेंज रो वैल्यू आउ थोड़ा हम टी डिस्कस करतमा रेंज कैन वेलोसिटी रो बाहरिबा रेंज मींस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. दिस इज रेंज. सपोज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और प्रोजेक्टाइल इज ab. So this is range and range can be calculated by horizontal velocity. Only horizontal velocity is used to calculate range and other time of height, maximum height and total distance in horizontal vertical direction always calculated by vertical velocity. Only horizontal velocity is used to calculate horizontal range. So range is equal to, first we know that horizontal velocity is equal to distance upon time, range upon time. So range is equal to, horizontal velocity, so u cos theta, so range is equal to u cos theta into time. So in previous class we find that what is the formula of time? 2u sin theta by g. What is the formula of time? 2u sin theta by g. 2u sin theta by g. So we can write that this is u square 2 cos theta sin theta by g, which is equal to r is equal to u square upon g 2 cos theta sin theta. Instead of 2 cos theta sin theta we can be write sin 2 theta because we know that 2 cos theta sin theta is equal to sin 2 theta. सरला एके तुम बाहर करथिलो किंतु रेंज बाहर करबो काजे तुम सिंपल फार्मूला यूज हेसी जे हॉरिजॉन्टल रेंज जेतु हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेंज अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम रो वैल्यू लिखि देना रेंज बाहरी गला देखा सिंपल फार्मूला. आ गुडे जिनिसटा मन रखिथिबो जे मैक्सिमम हाइट रो काजे केन फार्मूला यूज करबो v² - c² इज इक्वल टू 2x. टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट रो काजे केन फार्मूला यूज करबो v इज इक्वल टू u + at. किंतु सब वर्टिकल वेलोसिटी टा यूज हेबा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज नै हुए मन रखिथियो. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खाली रेंज रो काजे यूज होछि बिकॉज़ रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रे रहउछे, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टा यूज होछि.
बाकी जगह वर्टिकल वेलोसिटी यूजेस मन रख सरला। सो इटा थिला रेंज और मैक्सिमम रेंज भी हम पढिथिलु फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 theta is equal to 1 तो theta is equal to कितना है 90 डिग्री sin 91 sorry 2 theta is equal to 90 degree because sin 90 is 1 तो 2 theta is equal to 90 degree तो theta is equal to 45 degree so range is maximum for maximum range this is the formula u square upon g पढिथिलो एबे हम देखमा जे सेम एंगल सेम अलग अलग एंगल में डिफरेंट एंगल ने प्रोजेक्टेड कले हमें सेम रेंज के हिसाब रे पामा तो रेंज रो फार्मूला एबे जस्ट पाइलो तमे रेंज रो फार्मूला होचे u स्क्वायर sin 2 theta by g so this is the main expression for the range original or main expression for the range so if we replace theta is 90 minus theta theta के जदि हमें 90 minus theta लिखमा ले काना देखमा काना हेबा देखो so r is equal to u square sin 2 theta जगह के हम लिखला 90 minus theta upon g so this can be again write as u square sin 180 minus 2 theta by g so finally we can write that r is equal to u square sin 2 theta by g because you know that sin 180 minus 2 theta sin 180 minus 2 theta is equal to sin 2 theta so you can write sin 180 minus 2 into 9 180 minus 2 theta so if we replace theta x 90 minus theta so theta जगह तुम कितने पुट करो 90 minus theta तो then this is equal to sin 180 minus 2 theta and sin 180 minus 2 theta is equal to sin 2 theta so finally this original expression is derived so this expression also derived if we put instead of theta is 90 minus theta this expression also derived तार माने हमें थीटा एंगल ले प्रोजेक्टेड कॉले भी से समान रेंज पाएमा और 90 माइनस थीटा एंगल ले प्रोजेक्टेड कॉले भी से समान रेंज पाएमा बिकॉज़ 90 माइनस थीटा एंगल ले प्रोजेक्टेड कॉले भी से समान एक्सप्रेशन ही है उससे 2 थीटा और से तभी 2 थीटा बुझियाला कि नहीं तो 2 के 2 रख लो थीटा जगह थी खाली 90 माइनस थीटा रिप्लेस करो और देखलो जे फाइनली आउ थरे sin 2 थीटा डिराइव ही गला सो देखलो जे ई ओरिजिनल एक्सप्रेशन ता इने डिराइव ही गला तमे थीटा जगह थी 90 माइनस थीटा लिख लेबी सो रेंज समान आउछ तो थीटा एंगल रे प्रोजेक्टेड कोले भी से समान रेंज आसबा और 90 माइनस थीटा एंगल रे प्रोजेक्टेड कोले भी से समान रेंज आसबा का जे 90 माइनस थीटा आइले भी तमे 2 थीटा ही आछि समान फार्मूला आछि तो तमे एंगल 45 डिग्री जदि प्रोजेक्टेड करबो बेले भी समान रेंज आसबा तार संगे संगे 90 माइनस 45 से समान रेंज आसबा तो जरा पड़ो जे किंतु तमे थीटा इज इक्वल टू थीटा इटा फर्स्ट केस धरो तब जदि सेकंड केस में तमे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री में प्रोजेक्टेड करो आ गुटे 90 माइनस थीटा 60 90 माइनस 60 30 डिग्री रे प्रोजेक्टेड करो से समान रेंज आसबा बिकॉज़ तुमके कोहा गला थीटा जगह थी थीटा वे रे भी तुम प्रोजेक्टेड कले से समान रेंज आसबा और 90 माइनस थीटा वे रे भी तुम प्रोजेक्टेड कले से समान रेंज ही आसबा 2 और 2 तो कॉमन गला थीटा वे रे तुम प्रोजेक्टेड कले भी समान रेंज आसबा और 90 माइनस थीटा वे रे तुम प्रोजेक्टेड कले भी समान रेंज आसबा तुम जदी चाहबो थीटा इज इक्वल टू तुम 15 डिग्री रे प्रोजेक्टेड करो 15 डिग्री रे प्रोजेक्टेड करबो बोले आ गुटे सेम रेंज के डिग्री आसबा 90 माइनस थीटा रे आसबा तो 90 माइनस थीटा मींस 90 माइनस 15 मींस कितने 90 माइनस 15 75 डिग्री तार माने तुम 15 डिग्री ने भी प्रोजेक्टेड करो कि 75 डिग्री रे प्रोजेक्टेड करो रेंज का समान ही आसबा मन रखियो हला तो सरला इरा तमर थिला projectile fired at an angle theta with horizontal direction एटा लो क्वेश्चन पड़सी माने भल करी माने रखिथिबो आउ क्वेश्चन फार्मूला रे माने रखिथिबो न्यूमेरिकल रे फार्मूला इंपोर्टेंट r = u² sin 2 theta by g
मन रखिथिबो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g मन रखिथिबो मैक्सिमम हाइट तो फार्मूला मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g तमे सब फार्मूला मन रखिथिबो बोले ही तम 2g हबा मन रखिथिबो बोले ही तमे न्यूमेरिकल अपडेट ही पारबो सो एबा गुटे दुटा न्यूमेरिकल करमा तो ई टोटल तमर एंगल जदी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तमर सॉरी तमर प्रोजेक्टाइल ता फायर हबा एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल से टाइम रे तमर फार्मूला ने मन रखिथिबो आ तमे जदी बॉडी के प्रोजेक्टेड करबो हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट से तमर फार्मूला मन न रखले भी चलबा तमे डायरेक्ट लॉजिकली तमे यूज करी करी आंसर बाहर करी पारबो किंतु ई न फार्मूला मन रखबा के पड़बा जे इफ यू प्रोजेक्टेड ए प्रोजेक्टाइल थीटा एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल then you must be remember formula time of flight maximum height horizontal range सब लोकर फार्मूला तुमके मन रखबा के पड़बा so if you update formula then you easily solve numerical related with the projectile motion तो हम क्वेश्चन लिखमा में और नीचे बाहर करमा ए प्रोजेक्टाइल इज फायर projectile is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second of 98 meter per second of 98 meter per second from the top of hill from the top of hill 490 meter high 490 meter high 490 meter high find time taken to the reach the ground find time taken to the reach the ground find time taken to the reach the ground second question the distance of the target from the hill the distance of target from the hill. The last question velocity with which projectile hits the ground. Velocity at which the projectile hits the ground. So this is your question. The first score is question. First you draw a rough diagram. So the projectile is fired horizontally with a velocity 98 meter per second from the top of hill. Suppose this is a hill. This is a hill, and a projectile fired with velocity u, initial velocity u, 98 meter per second. Horizontally fired होचे देखो horizontally with a velocity 98 meter per second. Horizontally तुम projectile को fire करो 98 meter per second from the top of hill. Hill रो height दी दीजिए तुमके hill रो height 490 meter. हिल रो हाइट दे दीचे आ तुम फायर करो तो तुम जाइन छ फायर कला बेले कंपलसरी से ग्रेविटी रो काजे आके बड़ी लास्ट के इनो हिट करबा ग्राउंड के प्रोजेक्टाइल ता हिट करबा ई डायरेक्शन में ग्राउंड के हिट करबा सो इनिशियली तार वर्टिकल वेलोसिटी केते अछि इनिशियली तार वर्टिकल वेलोसिटी अछि 0 जणा पड़छ बिकॉज़ से इनो रेस्ट रे अछि तो इनिशियली ता डाउनवर्ड वर्टिकल वेलोसिटी किछि नै ना किंतु हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी केते अछि 98 मीटर पर
सेकेंड है। तो आम फास्ट फाइंड टाइम द फाइंड द टाइम टेकन टू द ग्राउंड। सो जेते बेले से ग्राउंड के देखो ग्राउंड के जेते बेले से आसबा वर्टिकली से केते डिस्टेंस कवर कला 490 बिकॉज़ ग्राउंड रो बाहरिला टोटल 490 डिस्टेंस तम कवर कला टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वर्टिकली तम 490 डिस्टेंस कवर कला। सो y is equal to we can write that 490 डिस्टेंस से कवर कला। क्लियरली बुझलो वर्टिकल डिस्टेंस खाली कवर कला हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करछि नो डाउट किंतु हम वर्टिकल डिस्टेंस रो एक्सप्रेशन ता कैलकुलेट करबा। खाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के नहीं यूज हेबा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ता सबले यूज हेबा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट कला बेल की यूज हेबा मने रखिथो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ता ताले वर्टिकल डिस्टेंस ता तुम टाइम बाहर करो टाइम ऑफ फ्लाइट बाहर करो हाइट बाहर करो जेहन भी यूज हेबा। अच्छा हम ये इक्वेशन हिसाब से बाहर करमा एबे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तल के आसुचे वर्टिकली तो यू कैन राइट दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस g। क्वेश्चन रे दीचे बोधे तमर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हम दी दीचे क्वेश्चन रे 9.8 आ तुमके बाहर करबा पड़बा टाइम। सो तमे इना फार्मूला लगे पारबो बाबू माने s ut plus half at square। हां आउ रे जिनिसटा वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी केते अछि 0 আছে तो इनो जणा पडुचे फाइनल वेलोसिटी तमे बाहर करि नै पार फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी तमके बाहर करि नै पार परे बाहर करबो तमे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। सो जेते तमर गिवन कंडीशन अछि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन 490 एक्सेलरेशन माइनस g। सो बजरा टाइम आके पचले छे टाइम t हलो। So equation of motion use कर दियो s is equal to ut plus half at square। So y is equal to ut plus half at square। So this expression तो 0 ही जीवा बाबू माने जणा पडुचे। So फाइनली मने रखिथियो जे ई एक्सेलरेशन माइनस g एबा जानिछो तमे तलके आउछे आ ई डिस्प्लेसमेंट जे तो तम डायरेक्शन तलके जाउछे तमे डिस्प्लेसमेंट के माइनस पहिले लिखले भी चलबा। So this is minus g। So value put करा बाबू माने minus y minus 490 is equal to minus half g जगह थी यूज करो 9.8 देखो g जदी नहीं दीथिबा 9.8 और दीथिबा बोले 10 दीथिबा देखो into t square minus minus cancel finally time will be कम टाइम केते बारीबा डायरेक्ट कोइ दोचे 10 सेकंड बारीबा 10 सेकंड बारीबा टाइम। सो 10 सेकंड टाइम रे से तुम ग्राउंड के हिट करबा किछि नै ना किछि तुम डिस्टेंस देखि दबा एक्सेलरेशन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 वर्टिकल डायरेक्शन में तुम कैलकुलेट करबो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दरकार नै टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन तो तुम आराम से कैलकुलेट करि पाबो बिकॉज़ वर्टिकल डिस्टेंस दीचे एक्सेलरेशन दीचे वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 तुम टाइम आराम से बाहर करि पाबो इन माइनस का लगा बिकॉज़ तो क्या आवश्यक बॉडी का प्रोजेक्टाइल हला ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होला अबाउट सेकंड क्वेश्चन। तो टाइम टेकन हला 10 सेकंड एबे कहते तो डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल द डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल तार माने तमर ई हिल रु धर हिल रो पॉइंट ता আছে ए पॉइंट रो আছে तमे बॉडी के प्रोजेक्टाइल को बी पॉइंट। सो टोटल डिस्टेंस तमर टारगेट केते हला ए बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तार माने तुमके पचरे छे आ तमे जानिछो बाबू माने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रो काजे हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज करबा। So horizontal distance is equal to कितना है? We know that horizontal velocity is equal to horizontal distance upon time. Horizontal distance upon time. So horizontal distance is equal to velocity into time. So horizontal distance is equal to horizontal velocity into time. So horizontal velocity question में दीचे 98 into time में भी देखते हो 10. So इटा इला 98 मीटर पर सेकंड। किंतु क्वेश्चन के बुझे आवा अछि द डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम द हिल हिल रो तम टोटल डिस्टेंस टारगेट केते करितो सेटा बाहर करबो मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करबो। एबे नेक्स्ट वेलोसिटी एट व्हिच द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड केते वेलोसिटी द्वारा प्रोजेक्टाइल का ग्राउंड के हिट करबा इटा ଗୋଟେ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो। तो सपोज धरो ई प्रोजेक्टाइल का ई टाइप में आसी को तम v वेलोसिटी द्वारा ग्राउंड के हिट करबा इटा दुईटा कंपोनेंट आसबा बाबू माने ई आले तमर हेबा फाइनल वेलोसिटी vy वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx आउ ई आले आसबा वर्टिकल वेलोसिटी vy।
सो तमे जदि पैरेललोग्राम करबो बाबू माने पैरेललोग्राम करबो तो जना पड़ुचे दिस इज डायगोनल एंड दिस फाइनल वेलोसिटी is equal to vx square plus vy square 2 vy vs cos 90 इति त दुईटा वेक्टर एंगल 90 सो से जगह का जने लिखि एथि लागबो तो तमे तो जानिछ बाबू माने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सब जगह रे समान रहबा तो इनिशियली जेते अछि 98 फाइनली भी तम 98 हबा तमके फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी बाहर करबा अछि बाबू माने तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी बाहर के हिसाब रे करि पारबो देखो तमके फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी रफली भाग बाहर कर देबा फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी के हिसाब से बाहर करि पारबो v = u + at तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस at मींस gt प्लस बट एक्सेलरेशन माइनस g हेबा कि नै ले u + at लिखि दितो किंतु a - g तो इटा डायरेक्टली वाला -gt सो तमे जाइछो बाबू माने इतार वैल्यू होचे 0 बिकॉज़ वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 तो वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी केते हेबा vy = gt दैट मींस 9.8 * 10 9.8 into 10 that means 98 क्लियरली बुझला बाबू माने तो वर्टिकल वेलोसिटी पाइलो पुट करो फाइनल वेलोसिटी केते रे तमरी देखो भल कर बुझो ई प्रोजेक्टाइल ता जेते बेले ग्राउंड के हिट कला बाबू माने ई वेलोसिटी रे हिट कला जाति दुईटा कंपोनेंट असबा गुडे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जेतकी के सेतकी ही रहबा किंतु वर्टिकल वेलोसिटी बाहर करबा पड़बा फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी तमे आराम से जानि पारो बिकॉज़ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 रहबा प्लस 80 ए तो माइनस g t रो वैल्यू तमे बाहर करिछो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी पाई गलो एबे तमे आराम से नेट वेलोसिटी बाहर करी पारबो जेन वेलोसिटी द्वारा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के हिट करबा तो नेट वेलोसिटी केते हबा vx केते दिछि 98 रो स्क्वायर प्लस vy भी केते हला 98 रो स्क्वायर तो आंसर नीचे बाहर करबा बाबू माने फाइनल आंसर हवा तमर 138.89 एबे जदी तमके इना क्वेश्चन न एंगल जदी पछरे थिता केते एंगल ने तमर ई प्रोजेक्टेड होछ जदी पछरे थिता न केते एंगल हॉरिजॉन्टली तमर एंगल सम प्रोजेक्टेड हवा बीटा तो तुम आराम से पाई जीवा बीटा = tan θ / a tan θ tan β = perpendicular vy base vx तो जदी बाहर करबा के चाहू बोले तुम केते एंगल ने से बॉडी ता तमर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टेड होছে देखो इका तो हॉरिजॉन्टल पाथ किने सो बॉडी जेते बेले ग्राउंड के हिट कला केते एंगल से ग्राउंड के हिट कला जे तुम बाहर करबा के चाहू बाबू माने पहले आराम से एंगल भी बाहर करि पारो बिकॉज़ tan β = केते हबा vy upon vx तो जे तुमके क्वेश्चन ने एंगल पछरे दिता फाइनल वेलोसिटी केते रे बॉडी ग्राउंड के हिट कला सेटा भी पछरे दिता तार संगे संगे जदी तो एंगल थ्रू व्हिच द बॉडी और प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड सेटा जदी पछरे थियोता बेले हमें फर्स्ट तो फाइनल वेलोसिटी बाहर कर दितो तापर तार जेतु दुईटा कंपोनेंट अछि हम पैरेललोग्राम बाहर करू ड्रा करू एटा के यारे लेलु सो हमें ई एंगल भी बाहर करी पारबा एंगल सब बोले वर्टिकल डायरेक्शन से मिसी करबा सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो पेरा थिला को फर्स्ट क्वेश्चन ई टाइप का क्वेश्चन तुमके पछरेबा बोले निजे करबो प्रैक्टिस करबो ही जीवा एबा आउले क्वेश्चन देखो A cricket ball is thrown. A cricket ball is thrown. A cricket ball is thrown at a speed 28 meter per second. 28 meter per second in a direction of 30 degree above the horizontal. In a direction of 30 degree above the
horizontal above the horizontal calculate maximum height calculate করব তারপরে time taken by the ball to return the same level time taken by the ball return the same level that means time of flight calculate করব তারপর horizontal distance আর horizontal distance calculate করব তো বাবু মানে इन তুমি ডাইরেক্ট ফর্মুলা মনে রাখলা বেলে হি आंसर बाहर करि पारबो बिकॉज़ क्वेश्चन में কইছে এটা তো বড় গ্রাউন্ড तो एक क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 28 मीटर पर सेकंड दैट मींस क्रिकेट बॉल के तुम इमेजिन प्रोजेक्टेड करूछ केते u वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड में तुम प्रोजेक्टेड करो इनिशियल वेलोसिटी u केते एंगल 30 डिग्री एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल तो 30 डिग्री एंगल तुम प्रोजेक्टेड करो तो तुम मैक्सिमम हाइट केते हेबा पचरे छी क्वेश्चन रे टाइम ऑफ फ्लाइट केते हेबा पचरे छी मैक्सिमम हाइट केते हेबा पचरे छी और हॉरिजॉन्टल रेंज केते हेबा सेटा पचरे छी तो तुम जाइछ बाबू माने ई याडे दुईटा कंपोनेंट हेबा याडे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हेबा तमर u cos थीटा दैट मींस u जगह की 28 थीटा जगह की 30 यार वर्टिकल वेलोसिटी हेबा u sin थीटा दैट मींस 28 sin 30 सरला एबे तुम आराम से बाहर करो टाइम ऑफ फ्लाइट को बाहर करो टाइम ऑफ फ्लाइट रो फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट फार्मूला डायरेक्ट मन रखबो ई टाइप रो क्वेश्चन देतिले फार्मूला अब हॉरिजॉन्टली तुम पकेबो तो सेटा तुम लॉजिकली भी सॉल्व करबो फार्मूला मन रखबा जरूरी नै ना किंतु एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जदि तुम पकेबो बोले फार्मूला मन रखबा के बाध्य तो टाइम ऑफ फ्लाइट रो फार्मूला होते q u sin थीटा बाय g तमे 2 into 28 sin थीटा मींस g u sin थीटा जति 28 sin थीटा है जी जी जरूरत नहीं 0.8 जदि क्वेश्चन दे दीचे g रो वैल्यू 10 हां नहीं 99.8 ही दीचे तमे से साथी बाहर करबो हला तो आंसर बारीबा तुम 2.9 सेकंड एबे धरो तमे हाइट बाहर करो मैक्सिमम हाइट रो फार्मूला काना बाबू माने टाइम बाहरी गला एबे मैक्सिमम हाइट मुई उल्टिया बाहर कर देली चलबा किछि नै मैक्सिमम हाइट रो फार्मूला काना u square sin square theta by 2g u square sin square theta by 2g बाहर करबो बाबू माने नीचे u sin theta रो होल स्क्वायर sin theta u square sin square theta means u sin theta रो होल स्क्वायर u sin theta केते दिछि 28 sin 30 रो होल स्क्वायर करबो means 28 square sin square 30 हेबा करबो तो बा डायरेक्ट लिखि दबो किंतु u sin थीटा रो स्क्वायर ही u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा तो u sin थीटा केते दिछि 28 sin थीटा तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा मींस 28 स्क्वायर sin स्क्वायर 30 जब लगबो डिवाइडेड बाय 2 into 9.5 सो मैक्सिमम हाइट बारी जीवा बाबू माने बाहर करबो 10 मीटर चलो फाइनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रेंज तो तुमके मैं बारंबार कहि छै हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रो बारीबा तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी केते u cos थीटा इनटू टाइम सो u cos थीटा मींस 28 cos 30 इनटू टाइम केते पाइछ देखो टाइम 2.9 सो आंसर बारी जीवा हॉरिजॉन्टल रेंज रो एहे सॉरी भूली जीवा जेहेतु तुमर टाइम हां ठीक अछि हॉरिजॉन्टल रेंज रो इटा वैल्यू तुम बाहर करले चलबा तुम फार्मूला पके छै तुम ई टाइप में भी बाहर करले चलबा u cos थीटा 28 cos 30 इनटू टाइम केते दी छै 2.9 ए साथ बाहर करले भी चलबा और रेंज रो फार्मूला मन रखले भी चलबा रेंज रो फार्मूला केते है टाइम जगह ती वैल्यू पुट करबो कि नहीं टाइम जगह ती वैल्यू पुट करले रेंज रो फार्मूला बा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g तो दुईटा वे तुम आंसर बाहर करि परबो तुम जब सिंपली जानि छ रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा बाय t का दिटे t रो जगह ती वैल्यू पुट हिचे 2u sin थीटा बाय t तापर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g हिचे तो तुम तो डायरेक्ट t रो वैल्यू जेहेतु जाई छ डायरेक्ट पुट करले भी चलबा किछि असुविधा नै
और ये टाइप तुम क्वेश्चन मैंने आसी काली आउ केतेटा न्यूमेरिकल करम भल न्यूमेरिकल। थैंक यू।